Assalamu alaikum everyone. My name is Rosina. I am working as a librarian in GCTW Little Lahore. Today I am going to present my review of an interesting and thought-provoking TED Talk by Jeremy Hyman's titled What New Power Looks Like. This TED Talk is about the changing nature of power in our modern world. Jeremy Hyman's explains that the traditional idea of power is changing because of technology, social media, online communities, and the increasing participation of ordinary people. The talk encourages us to think about an important question: who has power and how is that power being used? I found this topic particularly interesting because we are living in a digital world where almost everyone has the ability to communicate, influence, and participate. To understand new power, we first need to understand old power. According to old power is generally concentrated in the hands of a few people or institutions. It works like a currency. Those who have power can control it, use it, and sometimes decide who else can access it. Governments, large corporations, traditional media organizations, political institutions, and other powerful organizations have traditionally operated through this type of power. In this old model, there is often a clear difference between leaders and followers. A small group makes decisions while a larger group follow those decisions. For example, traditionally a television channel decided what billions of people would watch. A newspaper decided which stories people would read. A large organization decided what information would be shared with its audience. Ordinary people generally had limited opportunities to participate. The central idea of Jeremy's talk is new power. He explains that new power works differently. Instead of being concentrated in the hands of a few people, new power can flow through large communities. It is created through participation, collaboration, sharing, and collective action. Social media is one of the most obvious examples. Today, an ordinary person with a smartphone can create a video, write an opinion, start a campaign, or share an important message with a very large audience. People do not necessarily need to belong to a powerful organization to make their voices heard. This is one of the biggest changes brought by the digital age. Social media has completely changed the way people communicate. In the past, communication was often one way. A television channel broadcast information to viewers, a newspaper published information for readers. Today, communication is interactive. People can comment, share, criticize, respond, create, and collaborate. A person can post an idea in the morning and potentially reach thousands of people by the evening. This creates opportunities for people who previously had very little public influence. However, social media is not only about entertainment, it can also be a powerful tool for education, awareness, social movements, business, and community development. The power of participation. One of the most important lessons from the TED Talk is the importance of participation. New power becomes stronger when people participate. For example, an online campaign may begin with one person, but if thousands of people support it, share it, and contribute to it, can become a powerful movement. Similarly, crowdfunding Crowdfunding allows many individuals to contribute small amounts of money toward a common project. Online communities allow people with similar interests to exchange ideas and solve problems together. This demonstrates that collective action can create enormous influence. Another important message is that technology has changed the role of ordinary people. In the past, a person needed access to powerful institutions to reach a large audience. Today, the situation is very different. A student can create educational content,
A teacher can share lessons online. A librarian can introduce people to digital resources. A small business owner can promote a business through social media. And an individual can speak about an important social issue and attract attention from people around the world. Technology has therefore reduced some of the traditional barriers to participation. I believe the concept of new power is particularly relevant to education. Traditional education often place the teacher at the center of the learning process. The teacher provided information and student listened and learned. Today, students have access to an enormous amount of information through the internet. They can watch lectures, join online courses, participate in discussions, use digital libraries, communicate with experts, and collaborate with students from other countries. This means that students can become active participants in their own education. The role of teacher is also changing. Teachers are not simply provider of information. They can become mentors, guides, facilitators, and supporters. Technology can therefore create a more collaborative learning environment. New power is also changing the workplace. Employees can communicate through digital platforms, collaborate remotely, share ideas, and participate in decision making. Companions increasingly understand that employees are not simply workers who follow instructions. Their ideas, creativity, experience, and participation can contribute to organizational success. Modern organizations therefore need to create environments where people feel comfortable sharing ideas. A good leader is not necessarily someone who controls everything. A good leader can also be someone who encourages participation and empowers others. There are many benefits of new power. First, it gives ordinary people a voice. Second, it encourages creativity. Third, it supports collaboration. Fourth, it allows people to organize around common goals. Fifth, it can create opportunities for people who were previously excluded from traditional systems. New power can also make organization more responsive because people can quickly provide feedback. For example, customers can review products, students can provide feedback about learning experiences, and citizens can express their opinion about social media. This creates a more concerned society. Online platform can be used for cyberbullying, hate speech, manipulation, and harmful contents. We should think before sharing content. We should respect other people's opinions. Most importantly, we should use our digital influence ethically. The talk also gives us a new way to think about leadership. Traditional leadership often focused on control. New power leadership focus more try to make every decision alone. This is especially important for educational institutions. Teachers, administration, and educational leaders can create environments where students feel that their opinion matter. When people participate, they often feel more responsible for the success of the organization or community. In my opinion, Jeremy TED Talk is highly relevant to today's world. The talk helped me understand that power is no longer only connected with money, position, authority, or political influence. Today, a person with a good idea and the ability to connect with others can create significant influence. I also believe that new power can be especially useful for young people. To conclude, Jeremy TED Talk, What New Power Looks Like, presents a powerful idea about the changing nature of influence in the modern world. All power is generally controlled by a few people or institutions. New power is more open, participatory, and community driven. But this new opportunity also brings responsibility. How much power do I have? So, the question we should ask ourselves is not simply
Instead, we should ask, how can I use my power to make a positive difference? Thank you everyone for listening to my review. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जेरेमी हाइंस की एक नहायत दिलचस्प और मालूमात टेड टॉक व्हाट न्यू पावर लुक्स लाइक का जायजा पेश करने जा रही हूँ। इस टेड टॉक में जेरेमी हाइंस ने जदीद दुनिया में ताकत के बदलते हुए तस्वुर के बारे में बात की है। इनके मुताबिक माजी में ताकत ज़्यादातर चंद अफराद, इदारों और तंजीमों के पास होती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अवामी शिरकत ने ताकत के एक नए अंदाज को जन्म दिया है। ये गुफ्तगू हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ताकत सिर्फ ओहदे, दौलत या इख्तियार का नाम नहीं, बल्कि लोगों की शिरकत, ख्यालात और बाहमी ताउन भी ताकत पैदा कर सकते हैं। जेरेमी हाइमन सबसे पहले पुरानी ताकत यानी ओल्ड पावर की वजाहत करते हैं। पुरानी ताकत आमतौर पर चंद अफराद या इदारों के पास महदूद होती है, मसलन हुकूमतें, बड़ी कंपनियां, सियासी इदारे, रवायती मीडिया और बड़ी तंजीमें पुरानी ताकत की मिसालें हैं। इस निज़ाम में चंद लोग फैसले करते हैं और बाकी लोग इन फैसलों पर अमल करते हैं। माजी में आम लोगों के पास अपनी आवाज़ को बड़े पैमाने पर दूसरों तक पहुंचाने के मौके बहुत कम थे। माजी में मसलन एक अखबार फैसला करता था कि कौन सी खबर लोगों तक पहुंचेगी। टेलीविजन चैनल फैसला करता था कि कौन सा प्रोग्राम नशर होगा। यानी ताकत ज़्यादातर ऊपर से नीचे की तरफ मुंतकिल होती थी। इस टेड टॉक का सबसे अहम तस्वुर नई ताकत यानी न्यू पावर है। जेरेमी के मुताबिक नई ताकत किसी एक जगह महदूद नहीं रहती, बल्कि लोगों के दरमियान बहती है। अगर किसी शख्स के पास एक अच्छा ख्याल है तो वह उसे सोशल मीडिया के जरिए दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। ये जदीद दौर की एक बहुत बड़ी तब्दीली है। नई ताकत के फैलाव में सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम है। माजी में राब्ता ज़्यादातर एक तरफा होता था, मसलन टीवी चैनल खबर देता था और लोग सिर्फ सुनते या देखते थे, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। लोग पोस्ट कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, मालूमात शेयर कर सकते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसलिए ये कहना बेजाना होगा कि सोशल मीडिया सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं, बल्कि तालीम, कारोबार, आगाही, समाजी सरगर्मियों और कम्युनिटी बनाने का भी एक अहम जरिया बन चुका है। इस टेड टॉक का एक अहम सबक अवामी शिरकत है। जब ज़्यादा लोग किसी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं तो उनकी इज्तिमाई ताकत बहुत बढ़ जाती है। मसलन एक ऑनलाइन मुहिम एक शख्स शुरू कर सकता है, लेकिन अगर हज़ारों लोग इसमें शामिल हो जाएं, इसे शेयर करें, उसकी हमायत करें, तो वो एक बड़ी तहरीक बन सकती है। इससे साबित होता है कि बहुत से लोगों की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकती है। टेक्नोलॉजी ने आम इंसान के किरदार को भी बदल दिया है। माजी में किसी शख्स को बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचने के लिए अखबार, टीवी या किसी बड़े इदारे की ज़रूरत होती थी। आज एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन ही काफ़ी हो सकता है। एक तालिब इल्म तालीमी वीडियो बना सकता है, एक उस्ताद ऑनलाइन लेक्चर दे सकता है, एक लाइब्रेरियन लोगों को डिजिटल वसाइल के बारे में आगाह कर सकता है, एक छोटा कारोबार करने वाला शख्स सोशल मीडिया के ज़रिए अपने कारोबार को दुनिया तक पहुंचा सकता है। इस तरह टेक्नोलॉजी ने लोगों के लिए नए मौके पैदा किए हैं। मेरे ख्याल में नई ताकत का तस्वुर तालीम के लिए बहुत अहम है। आज के तलबा के पास सीखने के लिए बहुत से ज़राए मौजूद हैं। वो इंटरनेट से मालूमात हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तालीमी वीडियोस देख सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया भर के लोगों से सीख सकते हैं। इसी तरह से उस्ताद का किरदार भी बदल रहा है। आज सिर्फ मालूमात फराहम करने वाला नहीं, बल्कि एक रहनुमा, मददगार, मेंटोर और फैसिलिटेटर भी बन सकता है। नई ताकत काम करने के अंदाज को भी मुतासिर किया है। आज मुलाजमीन ऑनलाइन एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, ख्यालात शेयर कर सकते हैं और मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन कर सकते हैं। जदीद इदारे ये समझ रही हैं कि मुलाजमीन सिर्फ अहकामात पर अमल करने वाले अफराद नहीं, बल्कि उनके ख्यालात, तजर्बात और तख्लीकी सलाहियतें भी इदारे की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती हैं। नई ताकत के बहुत से फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका देती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देता है। तीसरा फ़ायदा ये है कि लोगों को एक दूसरे के साथ ताउन करने का मौका देती है। चौथा फ़ायदा ये है कि लोग मुश्तरका मकसद के लिए जल्दी मुनज़्ज़म हो सकते हैं। पाँचवां फ़ायदा ये है कि ऐसे लोगों को भी मौके मिल सकते हैं जो रवायती निज़ाम में ज़्यादा नुमायाँ नहीं हैं। लेकिन नई ताकत के कुछ चैलेंजेस भी हैं। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात बहुत तेज़ी से फैल सकती हैं,
झूठी खबरें, नफरत अंगेज मवाद, ऑनलाइन बदमाशी और नुकसानदेह मालूमात भी बहुत से लोगों तक पहुंच सकती हैं। हमें सोशल मीडिया को नफरत फैलाने की बजाय मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये टेड टॉक हमें क़यादत के बारे में भी एक नया तस्वुर देती है। रवायती क़यादत में अक्सर कंट्रोल को अहम समझा जाता है, लेकिन नई ताकत में शिरकत, ताउन और लोगों को बाख्तियार बनाना ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक अच्छा लीडर सिर्फ हुक्म नहीं देता, बल्कि दूसरों को सुनने, सीखने और आगे बढ़ने का मौका भी देता है। तालीमी इदारों में ये तस्वुर बहुत अहम है। मेरे ख्याल में जेरेमी को ये टेड टॉक आज के दौर के लिए बहुत अहम है। इस गुफ्तगू से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ताकत सिर्फ दौलत, ओहदे या इख्तियार का नाम नहीं है। ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए तस्वुर बहुत अहम है। नौजवान टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर असर व रसूख के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। इस टेड टॉक से हमें बहुत से इसबाक मिलते हैं। सबसे पहले कि हर इंसान की आवाज़ अहम है। दूसरा कि लोगों की शिरकत ताकत पैदा करती है। तीसरा सबक ये है कि टेक्नोलॉजी लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकती है। चौथा सबक ये है कि क़यादत का अंदाज तब्दील हो रहा है। और पांचवा और सबसे अहम सबक ये है कि ताकत को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमें कितना ताकतवर बना सकती है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम इस ताकत को दूसरों की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं जेरेमी हाइंस की टेड टॉक जो हमें जदीद दुनिया में ताकत के बदलते हुए तस्वुर के बारे में एक अहम पैगाम देती है, लेकिन इन मौक़े के साथ ज़िम्मेदारी भी ज़रूरी है। हमें अपनी डिजिटल ताकत को समझदारी, अखलाक और मुस्बत सोच के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे नज़दीक इस टेड टॉक का सबसे अहम पैगाम ये है, ताकत सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को बाख्तियार बनाने का नाम भी है। लिहाजा हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, मेरे पास कितनी ताकत है, के बजाय मैं अपनी ताकत को मुस्बत तब्दीली के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी गुफ्तगू सुनी। अल्लाह हाफिज़।